So, welcome back everyone. Dr. Niven here again from UPSC MEDICO. This time a little happier than ever because I could see our doctor fraternity doing very well this time in UPSC CSE 2024. And we have with us Dr. Iram. She has been part of my test series batch in 22-23 and also a part of daily answer writing program and revision batches. She's already an IRTS officer. She passed Civil Services 2022 with a rank of 852. She has joined the services and started preparation again, and now she is an IAS officer. Welcome, Dr. Iram. How are you feeling now? Because I know that for a doctor, uh, nothing less than IAS is satisfactory, and very happy to see you on the other side of victory. Yeah. Thank you so much, sir. Thank you so much for inviting me over. I'm still not able to process the rank actually. Last year it was 857. I was trying to improve the rank to some extent, but this rank, this is just unbelievable. I'm just very happy. I'm thankful for all the mentors like you, sir, who helped me during the preparation. Thank you very much, sir. Yes. Sir. So, see, in your scenario, jumping from rank 857 to rank 40, like you need to speak about the changes you have brought into UPSC preparation because this will help a lot of toppers who are on the list. Because I could see that almost 15 to 20 toppers who are into like rank 100 to rank 900 zone, they're again preparing for the next year exam, right? So, what guidance would you like to give them, or what important tips you want to share with them? सर इफ आई टॉक अबाउट माय प्रीलिम्स आई so इस अटेम्प्ट में मैंने यूजुअली जो चेंज किया था इट वाज द पीवाईक्यूज आई थिंक दे वर द गेम चेंजर फॉर मी बिकॉज बहुत इजीली जो है वो कट ऑफ जो है वो क्लियर हो रहा था इन द प्रीलिम्स बट इफ आई टॉक अबाउट द मेंस आई रिसेंटली चेक माय मार्क्स ऑलमोस्ट 100 मार्क्स का जो है वो चेंज है सर मेंस में it was I think I just wrote so many answers this time sir लास्ट टाइम मेरा मेंस का प्रिपरेशन इतना ज्यादा नहीं था सो इतने आंसर्स मैंने नहीं लिखे थे मेडिकल साइंस के आई रोट सम आंसर्स लास्ट टाइम आल्सो मैंने टेस्ट सीरीज लिया था यूपीएससी में इस बार मैंने जो डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम आता है वो मैंने प्रीलिम्स के प्रिपरेशन से पहले स्टार्ट किया था सो कुछ आंसर्स जो है आई रोट इन लास्ट दिसंबर एंड जनवरी के जो मंथ्स थे उसमें ऑलरेडी आई रोट सम आंसर्स फॉर द मेडिकल साइंस सो आइडिया लग गया था सर ऑप्शनल का कि जस्ट आंसर्स किस तरह से लिखना है केस मैनेजमेंट वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उनको किस तरह से टैकल करना है एंड ड्यूरिंग मेन टाइम जो आपका प्रीलिम्स और मेंस के प्रिपरेशन के बीच वाला जो टाइम है उस टाइम पे सर मैंने जीएस के भी बहुत आंसर्स लिखे थे लास्ट टाइम नहीं किया था वो सो इट वाज बिकॉज ऑफ द पीवाईक्यूज और मोस्टली आई स्टिक टू द पीवाईक्यूज के पहले पीवाईक्यूज कंप्लीट करेंगे उसके बाद टाइम बचेगा तो बाकी करेंगे सो आई थिंक वही वर्क किया है That सर worked, yes, yes. Because almost among all the optionals, the most frequently repeated the PYQs are from medical science background itself. Because I doing analysis for last 6 years, almost 80% of the questions are PYQs, right? So I could conclude by saying that the improvement is mainly because of answer writing practice, like at the earliest. Like this matches with Dr. Kiran May last year. She was also like from Danix, she got into IAS. She was ranked 56, and the difference she brought into her preparation was like as soon as she has decided to give the next attempt, she started with answer writing programs, right? Like for GS and also for optional medical science. I think that could be a game changer or a useful tip for anyone who is starting now for the next attempt of 25-26, right? So that's good. And out in 2018, I guess, right? And Yes, you're from Govt.Medical College Jammu and Kashmir. yes, And after that, you have given three failed attempts with prelims, right? yes. Now, see, this is not a rare phenomenon. I interact with thousands of doctors in the last two few years. Many of them are struggling at phase one or step one, that is prelims. So, True. what guidance would you like to give for doctors who are starting early, who think that prelims is an easy thing, and in your case, it was not so easy? And in many of the doctors, for example, Dr. Anshupriya, all India rank 16, 2, 3 years back, she also got. I think the first heart attack as a doctor we get is prelims, right? Throughout our career of schooling, getting into intermediate, then getting into medical college, we are always on the top list. But suddenly, that bitter taste of failure will come with prelims. Prelims is the first stage when where we start self-doubting ourselves. How are you able to cope up with three failed attempts of prelims? And what was the difference that you did in 2022, which actually got you through the line? Yeah.
और प्रीलिम्स इसलिए नहीं निकल रहा था क्योंकि एक जो राइट स्ट्रैटेजी दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रीलिम्स, कि आप पीवाईक्यूज जो है वो आप अच्छे से कर लें, अपना स्टैटिक पोर्शन पे यू नीड टू फोकस मोर, वो Yes. सिर्फ जो है वो नहीं हो पा रहा था। बट लास्ट टाइम जो प्रीलिम्स क्लियर हुआ और इस बार भी, बस यही डिफरेंस था कि मैंने पीवाईक्यूज पे बहुत ज्यादा फोकस किया था सर। पीवाईक्यूज बहुत बार प्रैक्टिस किए थे प्रीलिम्स के लिए भी, प्लस सी सैट का भी इशू जो है वो मुझे आ रहा था, सो उसका भी मैंने हर ऑल्टरनेट डे पे जो है सी सैट भी प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था। उसी Yes, की sir. वजह से सर इस बार आई वाज एबल टू वेरी कंफर्टेबली जस्ट क्लियर Okay. द Can you please share the resources which you used for prelims, both general studies and also the CSAT part? सिर्फ प्रीलिम्स के लिए, इफ वी टॉक अबाउट जर्नल स्टडीज, तो वही बेसिक बुक्स हैं। फॉर एग्जांपल पॉलिटी के लिए हर कोई लक्ष्मीकांत यूज करता है, सिर्फ वही यूज किया मैंने और कुछ भी यूज नहीं किया। ज्योग्राफी के लिए सर एनसीईआरटीज जो है 11th 12th की, स्पेशली जो 11th क्लास की दो एनसीईआरटीज है उन पे बहुत फोकस था। प्लस मैथ सीरीज जो है वो भी आप किसी भी आप यूट्यूब चैनल पे किसी भी एक इंस्टीट्यूट का मैप सीरीज कर सकते हैं, या फिर खुद से भी वो एक ऑक्सफोर्ड का एक एटलस आता है, वहां से मैप सीरीज पे भी फोकस था। उसके वजह से हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम ही थी। मेरा ज्यादा फोकस थोड़ा सा मॉडर्न पे ज्यादा था, एंशियंट मेडिवल जो भी थी उस पर इतना ज्यादा मैंने फोकस नहीं किया था सर, क्योंकि वो वीक पार्ट था, मैं उसको लेके बैठना नहीं चाहती हाँ. थी। बट आर एस शर्मा, नितिन सिंघानिया कर सकते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। Yes. इकोनॉमिक्स के लिए मैंने सिर्फ एक इकोनॉमिक्स के लिए मैंने एक मॉड्यूल जो है वो ज्वाइन किया था, और अपने लास्ट अटेम्प्ट तक मैंने वही मॉड्यूल जो है वही कॉन्सेप्ट जो है उन्हीं को रिवाइज किया है हर एक साल, उसमें कुछ चेंज नहीं किया। तो वो किसी भी एक इंस्टीट्यूट का एक मॉड्यूल उठा के, इट्स जस्ट प्रॉब्लम ये रहती है हमारी प्रिपरेशन में कि हम एक सोर्स के साथ जो है स्टिक नहीं कर पाते, Yes. हम चेंज करते रहते हैं। तो अगर एक पे कंफर्टेबल है तो उस पे ही रहें और उसी को करते रहें। साइंस एंड टेक एंड इन्वायरमेंट से उनका मोस्टली करंट अफेयर बेस्ड जो है वही किया था, और एक ही इंस्टीट्यूट का करंट अफेयर जो है वो फॉलो किया था। Yes. इवन दो मैं ज्यादा करंट अफेयर पे स्ट्रेस नहीं करूंगी क्योंकि मुझे नहीं लगता वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। आई थिंक स्टैटिक एंड पीवाईक्यूज अगर कर लें तो वो Yes. जो है वो सफिशिएंट है। और Yes. आई इट्स द करंट अफेयर ओनली, तो यही And कुछ। yeah, any special work on CSAT part? Because for doctors, this logical understanding, the ethical part, and also mathematic ability and all, we do have them, but due to our MBBS curriculum and all, we tend to ignore them. So what were you doing different with CSAT part? सर मैंने कुछ वीडियोस किसी एक इंस्टीट्यूट की वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल थी, उसमें से कुछ जो है कॉम्प्रिहेंशन मैंने अपना स्ट्रॉन्ग किया था। मेरा फोकस था कि कॉम्प्रिहेंशन जो है वो सही होना चाहिए, क्योंकि मैथ्स इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था और उस पर ज्यादा फोकस नहीं था। बट उसमें से भी जो कुछ टॉपिक्स थे वो मैंने किसी एक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब पे ही लेक्चर्स अटेंड करके वो देखे, उनको बार बार रिवाइज किया और फिर टेस्ट प्रैक्टिस किए थे। कोई किसी इंस्टीट्यूट के टेस्ट भी कुछ प्रैक्टिस किए थे, कुछ जो है वो पीवाईक्यूज जो थे जैसे लास्ट ईयर के जो पेपर्स हैं वो भी प्रैक्टिस किए थे। Yes, ma'am. तो सर सी सैट में इट वाज नॉट अबाउट कि क्या सोर्स यूज कर रहे हैं, मेरे लिए इट वाज जो टाइम लिमिट में नहीं हो रहा था, और बहुत ही पैनिक कर जाते थे जब एक दो क्वेश्चन नहीं निकलते थे वहां पे। Yes. सो पूरा प्रॉपर टाइम लगा के मैंने जो प्रैक्टिस किया उसको डिसाइड किया कि कुछ क्वेश्चंस को यू नीड टू जस्ट लीव, उनको ईगो पे नहीं लेना है कि नहीं निकल रहा है नहीं निकल रहा है, उनको छोड़ना है, वो अंडरस्टैंड करना सर जरूरी है सी सैट के लिए I सर। think we have prelims in around 30, 40 days time, right? So I think all these for aspirants who are giving prelims, upcoming prelims, they are useful. I think that the key takeaway here is practice यस PYQs a lot. Instead of giving undue weightage to the current affair part, you are focusing on strengthening your basics and statics portion. And apart from that, as you said, rightly, don't go with ego. I think you have to leave the questions which are out of the box. Rare is always a rarity, right? Go with the common things first. That was again like a golden word because that should be followed by everyone, and practicing like a lot of mock tests and also free resources which are available in the YouTube for CSAT part. Like that would be ideal because for doctors you have to stress upon the CSAT part. Coming back to the next thing, I think you have cleared prelims twice, and in both the attempts you cleared mains. You have attended interview and you are in the list, right? So if you clear step one, not only for rank, as I had seen many of the students, once they clear this step, I think uh, they won't be facing any hurdles in answer writing because doctors are equipped with good communication skills, and attending an interview as a medical professional itself gives you a little bit of bias into the interview part. So what was the main strategy and resources? सर मेन स्ट्रैटेजी में इफ इफ आई टॉक अबाउट द जीएस, जीएस का सर बेसिक मतलब थोड़ा सा नोट्स मेकिंग का ज्यादा, मेरा नोट्स मेकिंग पे ज्यादा फोकस इतना था नहीं, मैं कंफर्टेबल नहीं थी सर नोट्स बनाने में। कुछ सब्जेक्ट्स के जैसे पॉलिटी के आई नेवर मेड, मतलब आई मेड नो नोट्स, कोई भी नोट्स नहीं थे सर पॉलिटी के मेरे पास, वही बुक से ही रिवाइज किया था, वही बेसिक सोर्सेस करने के बाद
PYQs इस बार जो है वो मैंने बहुत लिखे थे। जैसे जब आंसर, अगर जीएस की बात करें तो मैंने टेस्ट सीरीज जो है वो ज्वाइन की थी। उसमें डेली आंसर राइटिंग, सर उसमें भी डेली आंसर राइटिंग जो है वो होती थी। तो दिन के 5-5 क्वेश्चन जो है मैं लिखती थी, जिसमें आधे क्वेश्चन जो है वो PYQs होते थे और 2 क्वेश्चन जो है वो कुछ न्यू करंट अफेयर वगैरह से उससे सॉल्व होते थे। तो वो डेली आंसर राइटिंग ने बहुत हेल्प किया पिछले मेंस में और इस मेंस में। लास्ट मेंस में मैंने सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल के आंसर्स लिखे थे, बट इस बार थोड़ा सा ज्यादा फोकस, क्योंकि एक बार अगर मेडिकल साइंस के आंसर्स लिख दिए हैं, थोड़ा सा आइडिया हो जाता है उसमें, ज्यादा बहुत ज्यादा आप चीजें कर भी नहीं सकते। सो इस बार थोड़ा सा फोकस जीएस पे था, क्योंकि जीएस पे इंप्रूव किया जा सकता था। सो ज्यादा फोकस इस बार मेरा जीएस पे था। उस पे मैंने वही अपने बेसिक सोर्सेस करके टेस्ट सीरीज में जो भी आता था उस पे भी वैल्यू ऐड करके वही जो है वही रिवाइज करती थी। सोर्सेस वही बेसिक जो हर कोई यूज करता है। प्लस इसमें मेंस में थोड़ा सा करंट अफेयर भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहां से आप वैल्यू एडिशन कर सकते हो अपने स्टैटिक वाले पोर्शन में। सो Yes. वही आंसर्स लिखे थे, रिवाइज किए थे। इस पर जस्ट ये चेंज किया था कि आंसर्स बहुत ज्यादा लिखे थे। मेडिकल साइंस, जैसे मैंने बताया कि मैं प्रीलिम्स प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले ही 1-2 महीने मैंने डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो भी वो कोर्स लिया था वो मैंने किया था। और वो Yes, Nana. के जो मॉडल आंसर्स आते थे सर, उसमें से मैं फिर अपने नोट्स में जो किसी किसी सब्जेक्ट के मैंने बनाए थे उसमें ऐड कर लेती थी। फॉर एग्जाम्पल कोई डायग्राम अगर मिल गया या फिर अगर कोई फ्लो चार्ट अगर मिल गया, तो वो चीजें मैंने अपने आंसर्स में ऐड की थी। और केस स्टडीज किस तरह से लिखनी है, केस मैनेजमेंट जैसे पेपर 2 में जो भी आता है, Yes, वो Nana. से थोड़ा सा जो है वो देख लिया था। और वही जब इस बार मैं रिवाइज कर रही थी तो जो मैंने आंसर्स लिखे हुए थे मैंने वो आंसर्स रिवाइज किए थे। Yes. सो ये चीज जो है चेंज की थी। इफ आई टॉक मोर अबाउट द ऑप्शनल, तो इसके नोट्स में मुझे हमेशा प्रॉब्लम रही है कि नोट्स बनाने हैं या नोट्स नहीं बनाने हैं, क्योंकि बहुत बल्की नोट्स बन जाते थे मेरे जब मैंने नोट्स बनाए। इवन इस बार भी लास्ट में भी रिवीजन का जब टाइम था तो बहुत बल्की नोट्स थे। सो आई टुक दैट रिवीजन कोर्स जो है मैंने लिया था, सो दैट अगर आप वीडियो देख रहे हो, आप सुन रहे हो, तो कभी कभी उतना आप एफिशिएंटली उतना प्रोडक्टिवली रिवाइज नहीं कर पाते खुद से। उस टाइम में थोड़ा स्ट्रेसफुल टाइम होता है। Yes, yes, yes. तो True. आई यूज टू लुक एट दोज वीडियोज और वही डायग्राम्स बार 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 बार। और सर एक चीज मैंने और की थी कि जितना भी मेडिकल साइंस में जो डायग्राम्स थी हर एक सब्जेक्ट की और जो फ्लो चार्ट्स थे वो मैंने कंपाइल कर लिए थे। Okay. वो एक जगह पे मेरी कंपाइलेशन थी, उन्हें मैंने बहुत बार प्रैक्टिस किया था सर। That जी। has worked for you. So, see, from optional point of view, सर, as a doctor for medical science optional and as a UPSC medico mentor, I should ask you few more detailed questions. But before getting into the optional, see, I will ask you straightforward question. There is a fresher who is sitting and watching at the home. I think we should add some value to his learning right now, right? So they'll ask only few questions to me, like when they call me, sir, all these toppers were they of any coaching background or they do self study? So there is no yes or no answer for this, right? So what do you want to tell? Should they join coaching for GS or should they only go for self study? Because there is a mixed version when you look at topper analysis or topper interviews. Then for GS point of view, making notes are just getting the best material from the market and underlying it to save time. In your case, you thought that it could become bulky, so you were relying on the ready-made resources as a smarter way to finish it fast, right? Because notes making is always a hectic process. So just give your insights on these two things for a fresh doctor who is starting his preparation. Should he be part of any coaching institute for GS? Should he be making his own notes or relying on the available material? Yeah. यस सर, इफ आई टॉक अबाउट द कोचिंग, सर मैंने खुद से फाउंडेशन कोर्स जो है वो नहीं लिया था कोई भी। क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स थे जो ऑलरेडी फाउंडेशन कोर्स ले चुके थे, बट उन्हें ये रियलाइज हुआ कि वो जस्ट सर पहले से ही रिसर्च करके आते थे कि कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा है। दिल्ली में जैसे ही लैंड किया वहीं जाके जो है फाउंडेशन कोर्स परचेज कर लिया, और फिर 3-4 महीने के बाद दे जस्ट गेट दिस फीलिंग कि नहीं, इससे कुछ नहीं हो रहा है। सो आई थिंक फाउंडेशन कोर्स लेना सर इट्स अ पर्सनल चॉइस। Mm. खुद मतलब मैंने खुद ही कुछ सब्जेक्ट्स जो है वो प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया था, और मेरे आगे पीछे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो मुझे समझा देते थे। मुझे इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम था, सो आई टुक इकोनॉमिक्स वाला मॉड्यूल। Okay. सो आई थिंक ये भी इट्स अ वाइज स्ट्रैटेजी कि पूरा फाउंडेशन कोर्स लेने की जगह अगर आपको जो सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा है, आप वो जो है उसका एक मॉड्यूल जो है वो ले सकते हैं। और इट्स बेटर कि अगर आप यहाँ आना चाहते हैं या फिर आप ऑनलाइन कुछ लेना चाहते हैं, तो थोड़ा सा आप उस टीचर के साथ कंफर्टेबल हो जाएं। तभी अगर आप कुछ उसका कोर्स लेने का सोच भी रहे हैं तो ले। अदरवाइज बहुत बार ऐसे होता है सर, हम सोच के कुछ आते हैं कि हमें ये टीचर पढ़ाएगा, बट हमें क्लास में वो टीचर दोबारा कभी दिखता ही नहीं है। Okay. Okay. तो वो एक्सेसिबिलिटी वाला इशू जो है वो रहता है। सो बस ट्राई टू जस्ट गो थ्रू द सिलेबस, ट्राई टू ओपन द बुक्स बाय योरसेल्फ। अगर आपको समझ आ रहा है तो डू दैट। वो थोड़ा सा ज्यादा आई थिंक एफिशिएंट है। जो नहीं समझ आ रहा है उसकी कोचिंग जो है वो ली जा सकती है सर।
And see, from our fraternity, I think I could see that 90 out of 100 are actually distantly based. They're doing online study. So your advice is that find out your weak areas and get help from the mentorship or coaching instead of going for full classes. And I had spoke to one more topper very recently. He's also of same opinion, because sometimes what happens if you go and sit in a institute where they teach GS, for a doctor it is altogether a new stuff. Like they'll start teaching you the core of the earth, the Yes, mantle and all. We start feeling bored and we tend to miss medicine a lot. I think these kind of easy things should be done in an NCRT book at home in a fast yes, paced manner, because we tend to lose interest. You can do self study, but you have to find out weaker areas yes. as soon as you can, so that you can get coaching help. And about notes making, it was like just go through the process of, yeah. या सर नोट्स मेकिंग का भी आई थिंक इट्स अ पर्सनल चॉइस। अगर आप कंफर्टेबल हैं, अगर आप बुक से पढ़ने में कंफर्टेबल नहीं है और आप नोट्स बना रहे हैं तो आप बना सकते हैं। लेकिन सर मैं ये बोलूंगी कि आप एक ही मतलब फर्स्ट रीड कर रहे हैं, सेकंड रीड कर रहे हैं, तभी नोट्स बनाना नहीं शुरू करते हैं। अदरवाइज एक नई बुक जो है वही सेम बन के आ जाती है। एक दो दो तीन बार पढ़ने के बाद जब आपको पता चल गया है कि ठीक है ये कॉन्सेप्ट्स हैं, और पीवाईक्यूज देख के कि ठीक है यहाँ इस एरिया से मतलब दे आर आस्किंग द क्वेश्चंस, तो रादर देन के फुल आप पूरी बुक ही दोबारा छाप दे, सिर्फ उन एरियाज के आप ऐसे नोट्स बना सकते हैं। नोट्स मेकिंग फर्स्ट या सेकंड रीड में नहीं होनी चाहिए सर। Yes. और हर रिवीजन के साथ आपकी वो नोट्स जो है वो और क्रिस्प होने चाहिए। आपको उससे मटेरियल निकालते रहना है सो दैट लास्ट में जब मेंस आपको देना है तब सिर्फ कीवर्ड्स जो है वो रहें। Your first time going to give a UPSC exam, what was your optional dilemma and how were you able to overcome it? यस सर व्हेन आई वाज इन द मेडिकल कॉलेज सो आई वाज वेरी क्लियर कि मेडिकल साइंस को ही ऑप्शनल लेना है, क्योंकि पढ़ लिया है। और सिलेबस जब मैं देखती थी तो मुझे लगता था ये वही टॉपिक्स हैं जो पढ़े हैं, और उतना सिलेबस नहीं है जितना हम एमबीबीएस में पढ़ते हैं, जस्ट 10% ऑफ दैट सिलेबस, तो ये हो जाएगा। सो ड्यूरिंग माय फाइनल ईयर एंड इंटर्नशिप मैंने मेडिकल साइंस ज्यादा नहीं पढ़ा था, मैं थोड़ा सा पॉलिटी जीएस से स्टार्ट किया था कि थोड़ा सा चेंज मिलेगा। इफ आई हैव टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने मेडिकल साइंस प्रिपेयर करना स्टार्ट किया कॉलेज से निकलने के बाद, मुझे बहुत बार ये डिलेमा आया था दैट आई शुड चेंज माय ऑप्शनल। Yes, yes, sir. आई वाजंट फीलिंग कंफर्टेबल विद द मेडिकल साइंस। द इशू वाज कि I just don't understand, didn't understand at that time where to stop. Yeah. Like huge. Anatomy में the first syllabus में जो first point दिया है, it is the anatomy of upper limb and lower limb. समझ ही नहीं आता था कि ये एक एक पूरा वॉल्यूम है सर बीडी चौरसिया Yes, का। yes, sir. Yes, वो sir. टाइम के साथ समझ आया कि पूरा नहीं करना है। नहीं करना है. दे Yes. आस्क्ड अबाउट द अप्लाइड एनाटॉमी एंड ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई, सिर्फ वही पढ़ना है क्योंकि पूरा हो ही नहीं सकता। तो इसी तरह से आस्ते आस्ते जब साल निकलते गए, छोड़ नहीं पाई मेडिकल साइंस को। बहुत सारे सीनियर्स जो हैं उनसे जब एडवाइस ली कि शुड आई स्विच टू अनदर ऑप्शनल लाइक एंथ्रोपोलॉजी, तो उन्होंने कहा कि नहीं मेडिकल साइंस नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि एक प्लान भी सिर्फ दिमाग में रहता है कि अगर छोड़ Yes. ही जाए, बहुत अनप्रडिक्टेबल एग्जाम है, इसीलिए नहीं छोड़ा। बट उसको ही किया। सो कुछ डिलेमा ये था कि ये नहीं हो रहा है, छोड़ना है नहीं होना है। बीच में आई रिमेम्बर एक बार मुझे लगा कि यूपीएससी नहीं होगा, जब एक दो प्रीलिम्स के बाद। सो मुझे मैं नोट्स ले आई थी सिर्फ पीजी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, कि लेट्स स्विच, अब पीजी ही करेंगे। Mm-hmm. वो एक दो दिन का ही था, सो आई स्विच बैक टू यूपीएससी प्रिपरेशन। बट हाँ ये डिलेमा रहता है। So you were able to overcome, because the strongest motivational factor for you is that your heart is saying medicine, and second thing is you have a plan B, Yes, because this exam is unpredictable, right? So that is good, because many of the aspirants who are not in the list today, they will be thinking about plan B, right? yes. They will write the upcoming NEET PG, UPSC CMS. Like, how are you able to tide over the crisis period, and how are you able to restart, right? What was that motive? Yeah, I observed like persistence is the key to success in UPSC, and many people give up. Like out of 100 students who join UPSC MEDICO, I hardly see 10 students persisting and giving their exams, and these are the 10 who are there in the list. So in your case, what was that motivating or persisting factor which pushed you again from plan B to plan A, let's say? Yeah. और फैमिली से बात करके भी उन्होंने लगा कि नहीं मतलब इतना इजीली तो नहीं छोड़ सकते, अभी एक बार भी प्रीलिम्स नहीं हुआ है, तो ऐसे था कि एक बार बस प्रीलिम्स हो जाए तो हो जाएगा। Yes. और जब सब आसपास देखते हैं कि ठीक है हर एक जो है वो सेम चीज से ही गुजर रहा है, सबको यही इश्यूज आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि ठीक है यू आर नॉट अलोन, हो जाएगा। ये एक प्रोसेस है, ये ऐसा ही प्रोसेस है सर, इससे तो। Got it. Got it. See, this is what I tell my students. I want to add, I want to take 2 minutes from you, because what happens now is that if you live in a cult or like-minded people,
you get motivation to continue, right? Because UPSC itself is a big ocean. If you see people who fail and who still persist, they themselves impart that motivation to you. But problem with medical fraternity is that as you distance away, like if you do Mm. an online reading, your friends are actually those medicos who get into MD, MS, DNB. They pass out, like they kind of show a life which is entirely different from what you have to go through, right? So this alienated feel is actually hurting a lot of medical students who want to pursue UPSC dream. And we will conclude this part of the discussion by saying that be with a cult, be with like-minded people who Yes. motivate you. So in our case in UPSC Medico, we do have separate social channels wherein we conduct all this. See, the real motto behind us, like Dr. Naveen and Dr. Iram, taking time and giving this valuable insights is to keep you motivated, because it is possible, and it is possible in case of Dr. Iram. That's why she is sitting here. So I think this is the key takeaway for many of the people who were not in the list this time, right? So yes, that's good. Coming back to, we're done with the optional part. So I'll conclude by saying optional part. Iram was like persisting with medical science. At first, she was not able to understand what is important from syllabus point of view, but later she was able to understand that there are niches where you have to actually work in medicine. And apart from that, finishing your answer writing practice early. This is what I tell my students. This is not an exam to show your concepts. You're not going to treat a patient. I brutally tell them that you have decided not to become a doctor. Yes, sir. You should only learn that subject which gives you marks in the optional, so that you can quit this and start your civil services job from specialization to generalization. So most of the times, as you said, people thrive for sense of completion. In my case, when I started this institute in 2020, Yeah. wherein you have started your preparation, I started with 60-hour crash course. Okay. Now this has become 400-hour foundation course, just because students want everything. They want sense of completion. They want to learn everything. And here lies the secret, Nana. You shouldn't be thriving for sense of completion. You have to find that boundary wherein I only need to read this much. And the boundary is clearly are the वो जो लक्ष्मण रेखा है ना, that is Yes. actually PYQs. Focus on PYQs. I think that is the biggest takeaway from optional point of view. First, master PYQs. Second, start answer writing at the earliest. Many of the doctors, what they do, in your case, the biggest difference in 2022 and 2024 is that 2022 test series was very close to exam. But Yes. 2024, you have finished daily answer writing program Before way prep. before the thing. This is what happens with doctors. You are fighting a war wherein 30% is medicine, 70% is general studies. So when you reach this stage, you have to focus and master general studies. If you're still struggling with medicine, you might need to give another attempt, right? So that was the thing. So finish off your answer writing as early as you can, master your medical science, and in this case, get rid of the headache of optional as early as you can. That will give you fruits. I think Yeah. that's the one more key takeaway. Let's quickly jump into the interview part, because nowadays, uh, personality test is like do or die, right? They can Yes. give you somewhere around 80 to 90, or they can give you somewhere around 190, 210, 215 also, right? Yeah. Yes. So that make or break is always personality test. So how are you like preparing for personality test? What are all the how many mock interviews have you attended, and what were the health related or public health related questions that they asked you, and how are you preparing for that? Just brief me through that. So for interview preparation, I started only after mains. मैंने ऐसे पहले से कुछ भी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया नहीं था. Yes, sir. जो मेरा फर्स्ट लास्ट 2022 वाला अटेम्प्ट था Yeah. उसमें आई वॉज वेरी नर्वस. सो बहुत सारा मॉक इंटरव्यूज जो है वो मैंने अटेम्प्ट किए थे. बट इस बार सर मॉक इंटरव्यूज आई थिंक 3 और 4 ओनली, बिकॉज मैं आई वॉज अंडर ट्रेनिंग. सो इतना टाइम मिल नहीं पाया, तो इस बार उतना किया नहीं था. मेडिकल साइंस के लिए सर लास्ट टाइम बहुत ज्यादा प्रिपरेशन किया था. लाइक आई प्रिपेयर हेल्थ स्टैटिस्टिक्स जो भी होता है वो सब, जो स्कीम्स है मेजर मेजर स्कीम्स वो सब, उनका थोड़ा सा क्रिटिकल एनालिसिस वो टाइप, थोड़ा सा जो भी आपका मेडिसिन का. आई वॉज वेरी कंफ्यूज लास्ट टाइम कि क्या ये मेरे से कोई डिजीज, अगर कोई मेंबर डॉक्टर ही हुआ तो मेरे से कोई डिजीज के बारे में पूछ लेंगे क्या. आई वॉज वेरी कंफ्यूज अबाउट दैट. बट इस बार मुझे समझ आया कि थोड़ा सा जो उसका प्रिवेंटिव या थोड़ा सा सोशल एस्पेक्ट जो है, लाइक PSM वाले जो क्वेश्चंस Public होते health. हैं, Yes, तो yes. थोड़ा सा उनका ज्यादा फोकस रहता है. लास्ट इंटरव्यू में भी ज्यादा क्वेश्चंस मेरे से मेडिकल से नहीं थे, बिकॉज
मेरा डैफ में बाकी बहुत कुछ था, लाइक फॉरेन सर्विसेज माय फर्स्ट प्रेफरेंस, तो आईआर से क्वेश्चंस थे और स्टेट से भी थे। तो मेडिकल का क्वेश्चन मुझे एक ही याद आ रहा है लास्ट टाइम से, कि न्यू टेक्नोलॉजीज जो भी हेल्थ में आ रही हैं वो क्या क्या है, और वो क्या एक्चुअल यूज में है अभी कहीं, या जस्ट एक कॉन्सेप्ट ही है। हम्म। इस बार जो क्वेश्चंस थे मेरे से, वो भी दो तीन क्वेश्चंस लाइक जेनेरिक ड्रग्स के बारे में सर क्वेश्चन था, या यस। फार्मास्यूटिकल कंपनीज को लेके कुछ के वेयर आर दे लोकेटेड, इस तरह से कुछ क्वेश्चंस थे। बहुत ज्यादा हेल्थ रिलेटेड मेरा इंटरव्यू जो है वो रहा नहीं लास्ट टाइम भी और अभी भी। यस। और ये कुछ एरियाज थे जो मैंने अलग से हेल्थ के लिए प्रिपेयर किए थे। इसके अलावा बहुत सर मेडिकल का मैंने इतना नहीं किया था, बस वही जीएस से कुछ चीजें निकाल के, हेल्थ स्टैटिस्टिक्स हो गए, बेसिक स्कीम्स जो हो गई, और सोशल जो एस्पेक्ट है हेल्थ का, वो प्रिपेयर किया था सर। Yes, these are the few things that students ask me. So you were telling that you are interested in foreign services. That is what you're going to uh, opt for now. Yes, sir. My first preference is foreign services. Okay. Any specific reason behind that? Because I was calling you Iram IAS, like I changed your name in the Yes. mobile also. No specific reason as such, sir. I Good. really like the career profile of a foreign service officer. Plus, I really like traveling also. Interested in international relations. So I think that is the best choice for me, Indian foreign service. Yes, sir. And what about switching? Why did you first, in the first place, wanted? What was your motivating factor into UPSC? Yes, Because you said that you have started little early during your MBBS itself, right? sir. I started in uh, final year and mostly in internship. I had no idea about this exam till final year. Some of my friends, they were preparing. I got to know about this exam from them only. So just interest जो है वो develop हो गया कि ठीक है सर। इतना कोई स्ट्रांग ऐसे वाई नहीं था, इट्स Mm, जस्ट कि एक बार ट्राई करके देख सकते हैं, हमेशा से स्टूडियस रहे हैं। ये mhm, एग्जाम है, ठीक है, थोड़ा हार्ड वर्क करेंगे हो जाएगा। और mhm. डाइवर्स है, लाइक मेडिकल में यू हैव टू, यू आर जस्ट लुकिंग ओवर वन फील्ड ओनली, बट यहाँ पे थोड़ी सी डाइवर्सिटी तो है, तो वो चीज जो है वो थोड़ा सा अट्रैक्टिविटी कि Next. एक बार लेट्स ट्राई। Uh, यस, how was your medical career? Were you a bright student then? Like, what was your medicines course and all? it was around 65% only percentage if I talk about, That was not. quite, this statement is quite motivating for me because what happens nowadays is somewhere around like from Tamil Nadu, one student will call me and sir, I'm not a bright student in medicine. I only got 60%. Can I do UPSC? There is no link, right? No, Okay. sir. Mm. Have you been part of any extracurricular activities during your medical career? No, sir. I was mostly into studies only. No extracurricular activities. There's one area which caught my interest this time because you know, right? UPSC, did you apply for this upcoming prelims also? No, sir. You didn't apply. So you're sure that this is going to be your. I wasn't sure, but last time I had decided only that I'm not going to give any more attempts now. This is the Does it make any difference? Do or die stuff? maybe, sir. Maybe. Maybe, right? But what advice will you give for a young buddy who want to pursue UPSC? So what changes he should bring in his curriculum or his personality during his medical days to be a fit or an apt person for UPSC? Yes, sir. बट अगर इफ यू आर अ डॉक्टर, तो आई थिंक फर्स्ट कुछ ईयर्स अपना बेस बनाने में, कॉन्सेप्ट्स बनाने में, कॉलेज लाइफ एंजॉय करने में, आई थिंक दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। बाद में यूपीएससी की प्रिपरेशन की जा सकती है थोड़ा थोड़ा सा, इतना नहीं स्ट्रेस लेना नहीं है। और उसके बाद सर अगर डिसाइड कर ही लिया है कि यूपीएससी करना है, तो आई थिंक स्टार्ट फ्रॉम द सिलेबस। सबसे पहले अपना सिलेबस देखें, अपने जो सोर्सेज हैं वो क्लियर करें कि यहाँ से करना है। देन पीवाईक्यूज, पहले पीवाईक्यूज ही खत्म करने हैं, उसी के बाद अगर टाइम बच रहा है तो आपको बाकी चीजें करनी है, क्योंकि 70% आई थिंक इट इज बीइंग 70 रिपीटेड। to 80%. I have analyzed for last 6 years. So I think 80% is too short from previous, not question again, like previous topic is being repeated. Yes. Go ahead. Please go ahead. तो उसके अकॉर्डिंगली आई थिंक हम अपनी प्रिपरेशन मोल्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हिप जॉइंट से एक साल एक क्वेश्चन आ रहा है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर अगर वो रिपीट हो रहा है, कुछ और चीजें ऐड हो रही हैं, सो ऐड दोज न्यू क्वेश्चंस टू योर नोट्स, क्योंकि वो रिपीट होने के चांसेस जो है वो बढ़ सकते हैं। तो पीवाईक्यूज पे ही अपनी प्रिपरेशन थोड़ा सा स्टिक रखें, वो थोड़ा ज्यादा होगा रादर देन कि आपको लगे कि आप सिलेबस ही कंप्लीट कर लोगे। वो थोड़ा सा सर डिफिकल्ट रहता है, कंप्लीशन आता नहीं है जैसा आपने बोला। Yes. दिस इज माय एडवाइस सर। और डोंट जस्ट सिट ओवर अ सिंगल टॉपिक, जस्ट मूव ऑन, जस्ट कीप मूविंग के पूरा करना है। एक ही हिप जॉइंट को अगर लेके बैठेंगे तो 4 दिन से जा सकता है। तो आई थिंक ये कुछ एडवाइस है जो फॉलो करनी है मेडिकल साइंस के लिए। Yes, good.
So from like medical science point of view, the key takeaways, this is what I tell all my students, right? Too many cooks spoil the broth. Like people want to kind of collect too much of data. They join too many institutes and they make their revision material bulky. And you have proven that practice always makes you perfect because you have started practicing very early, the daily answer writing part and all. And focusing on PYQs is not only for medical science optional. For any GS, you Correct. have to work on PYQs because even when I need to prepare any mock test for students also, I go through PYQs to get a general idea. I think Yes, the usual mindset of a exam paper setting, sir. right? Yeah. Like to talk about the test series, sir. I think it helped me immensely because there were PYQs in the test series. There were new questions that we can expect that can come in next year. I think it was really helpful. You Yeah, can. this time we did that change because what happening when you focus too much on PYQs, in medical science, the problem is question number one and question number five, where they're mandatory sections, they're giving 20 marks, like True, it's true, the sir. unasked version. Yes, sir. I made it difficult, but students started feeling little more pinch because already medical science is not a single subject. It's a mix of multiple subjects. On top of that, just due to peer pressure, I have recorded so many lectures, right? And I have made. But again, the winner is always the common things. So when I started my internship in Gandhi Medical College in Hyderabad, it was long back. It's been 10 years, right? 10, 12 years. The first thing what my medicine HOD told me that in life you have to follow common things first. True, sir. There True. is a case, always suspect TB. Even if it is a rare lymphoid neoplasm in the lung, you should suspect TB and put him on ATT. That will work 9 out of 10 times. Rarity is always rare, right? So, common things first. So, that is what you have to practice in life. And I think that worked wonders for you this time. And all the things which you have shared with us are like golden words for the upcoming doctors because you are an inspiration in many ways. In last 6 years, I had seen students not actually following the right steps at the right time. I think 23, 24 was the year where you actually tick most of the right Yes. boxes, right, in the preparation. So that has worked wonders. So we'll conclude this session. The final points would be go through your syllabus, then see the PYQs, practice your diagrams, your flowcharts. They are very important. Then, sir, you can follow that pattern in answers. For example, intro, body, and conclusion. Same we follow in GS. We can follow the same in our medical science also. You can add some scheme, some health scheme in the conclusion, or a health statistic in intro. It will definitely improve your marks. Intro and all, yes. Uh, just don't try to achieve perfection. You'll just never be there. Just start writing answers. Write as many answers as you can. So Yeah. these are They say, right, you should start writing yesterday it. for this UPSC, not even today. You should have started writing before even asking. And I had seen many of the budding aspirants waste a lot of time in strategizing rather than acting. The True. war has already started. So you have to be on toes with your preparation. So nice talking to you. Hello, my name is Iram Choudhary. I have secured rank 40 this year. I would really I would really like to thank UPSC MEDICO for helping me during my for my medical science optional. I have been associated with UPSC MEDICO since 2022 and enrolled in several courses. For example, test series, for example, daily answer writing program and the revision sessions this year, which greatly helped me in revising and enhancing my answer writing skills also. This improvement it played a key role in boosting my score in 2024 and securing rank 40. I believe UPSC Medico it offers some of the best guidance available for medical science aspirants, and I highly recommend it. I would really like to thank UPSC Medico for being a part of my journey. Thank you very much.